Hello everyone, welcome to Beyond Market. This is Dr. Abdul Moheen. As you know that we started a series on IPR and this is our second lecture on the basics of IPR or fundamentals of IPR. So in this series we are going to start or trying to build a understanding of IPR in various perspectives. And basically, we will be focusing on the patent part only. So as you can see my screen, the basics of IPR, why we need as of now much every person talking about IPL, you know, because the institutions, you know that because all the institutions, maybe the IITs, ISC, other foreign countries, universities, industries, all those are wants to all those are wants to protect their inventions. So the only way to protect the invention to via IPR only, you know. So that as you can see, there are some cutout what I took here, and those kind of the cutout will help you to understand how most of the business units may and top tier institutions, everyone talking about the IPR. Come to the significance why any person can make their career in this field. This is not only to make your career in with the industry or maybe in the private sector, but as of now you can see the cutout of ICMR also. ICMR last year posted as a scientist C position in non-medical category, and the particular requirement was a 4 year of experience in the IPR. And lots of the industry, every industry, if that industry is at the mid scale or large scale, every industry having their IPR division, and that IPR division closely work with the research and development team. They are guiding to research and development team what they have to do further or not. You know, so it is about the the significance and why every person talking about the IPR. Let's begin our lecture from here. Intellectual property right, as the term itself states, about exclusive right, exclusive right to a person provided by the government of whoever the country, like I am coming from the India, so or the Indian government giving me particular exclusive right for a certain period of the time so that I can get the privilege of my intellectual property. It that intellectual property, it is a intangible potential asset, and it will give me the monopoly. So how that thing to start? How the thing to start with the idea. You have some idea. You are going to convert your idea. Yeah, right. You are going to convert your idea into the product, into the process, into the invention, and you wanted to protect your or invention through the IPR, and ultimately the goal is nothing. Goal is to uh, protect your or invention in the market. So there, this is the property, right? As we know that the properties can be two types. This is the tangible properties and intangible properties. As we are aware about the tangible property, what kind of the tangible property you have? You have a tangible property, maybe is in the form of a car, maybe it's in the form of the building, maybe in the form of a plot, any other thing. But intellectual property, it is an intangible property, right? It is an intangible property. If you who have some music, right, and you build that music by yourself, then you can protect your right under copyright. So come to the more detail about that. This is the flowchart how that evolution happened of IPR. So here idea, if you have idea and you express that idea, right? If you express this idea, then you can go for the copyright. If you have idea and then you are going for the innovation and invention, then you can go for protect via patent. What is about out if you have idea, yeah, right? If you have idea and you want it to protect that idea is in the form of the mark, is in the form of the symbol, so you can go for the trademark. If you have idea, right, and that you feel that that idea, that design is novel and meeting all the criteria to protect your invention, you can go for the design. If your idea, you don't want to share your idea, you don't want to do anything, then you can simply take it as a trade secret.
This is a simple layout we need to understand before moving further. In IPR, patents, right? Patent, trademark, patent, trademark, industrial design, plant variety, copyright, geographical indication, layout design of integrated circuit, and trade secret. So all those way you can protect your invention. This is IPR is nothing. You are going to protect your invention so that you can commercialize. You can get the privilege of the monopoly. Come in the more detail about the patent. What do you understand from the patent? Patent, suppose पेटेंट व्हाट इज पेटेंट पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक या कोई भी गवर्नमेंट आपको एक राइट प्रोवाइड करती है। आपने उस इन्वेंशन में अपना मनी स्पेंड करा है एंड अपनी चीजें स्पेंड करी हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री गिविंग दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट or particular company to exclusive right, and that exclusive right which is a product, which may be a product, which may be a processes that provide in journal, right, and offer a new technical solution so that many other people will come up the technical solution for the available problem and then get the privilege of that. And you, as you everyone know about that, it generally you can get the privilege till 20 years, and you can give your license if you have a patent grant. You can give that patent to anyone for the license, and you can ask the royalty for this, or you can simply sell your IP also. Many of the industry, many of the small industries or universities are doing some invention in their laboratory, and they are there. They are coming up with the IP, and they are selling that IP to the very big shot to gain the money. After expiry, what is the good thing is about after the expiry of that particular invention, if any person have that, after that, that will be available in the public domain. Any person can make the same kind of the product what the product was protected that time, right? Come to the copyright. Copyright as it is more about the like a literary work or musicians को आपने देखा होगा हमारा copyright infringe हो गया, किसी ने किसी का गाना डाल दिया copyright infringe हो गया, तो copyright is like this only. And some of the examples, poem, thesis, publication, anything, anything. If you wanted to create a literary, music, or scientific artistic work, right, then you will be the owner of this, and you will have a right to protect your things from the other people. Here invention, or invention, product, processes is not involved. Here is about the literary work, music, and other computer software. अगर आपकी ऐसी चीजें हैं तो आप कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट करोगे, पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं करोगे। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क ये सारे नीचे माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, मैकडी, नाइकी, KFC, एप्पल, all those trademark, you know that, right? You maybe know all the owner of the company or not, right? But you must know, if you will see the logo of this Apple, you know that this is the Apple brand, and this is providing you giving you extra confidence, additional confidence to okay, if the product has this logo, that product must be good in that way, right? That's why trademark is a distinguished sign or indicator used by an individual, business organization, or other legal entity to identify the consumer that the product and services, right, on or which the trademark appear originated from the original source. It is not coming from the any other. Suppose lots of the person be aware about that Adidas and Adibas, so similarity will be there, but in that company, if this Adidas can simply sue to this Adidas manufacturer and then stop the manufacturing of this because the similarity of the mark. Come to the geographical indication. And geographical indication is nothing. It is a name or sign used on goods that have geographical origin and possess something particular quality and reputation characteristic that are essentially attributed to that particular place. Suppose, example, Kolhapuri chappal, right? Kolhapuri chappal, Darjeeling tea, and that is laddu. Oh, that is very famous laddu. Is Tripura laddu or
some of the temples, that laddu is very famous. So those kind of the laddu also. So these kind of the things are also coming under geographical indication. Trade secret. Trade secret, very good example of trade secret is if you have a formula and you are practicing that formula, if you have design, if you have instrument, if you have pattern or complete, and so that you that information are not generally known to the public, right? And by which the business can obtain an economic advantage over the competitor. Suppose the Ruh Afza, it is a very big example. The Hamdard Ruh Afza, Dawa tried to make the same kind of the product, and that name was the Sharbat-e Azam, but he was not able to succeed with that. But the trade secret available, trade secret present in the Ruh Afza, that is giving the additional benefit. That's why I think so far more than 100 years हो चुके हैं इसको, अभी भी जो है रूह अफ़ज़ा का रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया। लेआउट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजाइन आपने कभी फोन खोला होगा तो आपने चिप्स देखी होंगी, एंड लॉट्स ऑफ द सर्किट एंड लॉट्स ऑफ द डिजाइन यू कैन सी देयर, दोस काइंड ऑफ द पैटर्न, राइट, दोस काइंड ऑफ द लेआउट डिजाइन आल्सो कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर द लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. Come the next point is about the industrial design. Industrial design, don't get confused with the confused with the integrated circuit. Integrated circuit is a pattern and layout design, right? And the industrial design is different, right? Industrial design is the ornamental or aesthetic aspect of an article. This design may be having the three-dimensional structure, या आपने किसी का देखा होगा किसी ने कब कुछ ऐसा डिजाइन करा, उसमें कुछ नोवेल्टी उसने क्रिएट कर दी, तो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में जाएगा, वो इंटीग्रेटेड सर्किट में नहीं जाएगा. ये क्लैरिटी रखिएगा. यहाँ पे जो है मैंने टाइमलाइन ट्राई करा है कि टाइमलाइन जो है एक ही जो है स्लाइड पे कर दिया जाए, सो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस व्हाट द मैक्सिमम प्रोटेक्शन देखें. पेटेंट यू विल गेट अ मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑफ 20 ईयर, एंड आपको रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ती है इंडिपेंडेंट पेटेंट ऑफिस में. बट इन ट्रेडमार्क आपका लाइफ टाइम होता है, बट आफ्टर 10 ईयर के बाद आपको जो है उसकी फीस पे करनी पड़ेगी. सेम केस ऑफ द डिजाइन का प्रोटेक्शन आपको 15 ईयर का मिलता है, बट आफ्टर 10 ईयर के बाद आपको अगले 5 साल की फीस जो है पे करनी पड़ेगी. कॉपीराइट यूजली 60 ईयर्स तक होता है, नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ द रिन्यूअल. एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, एंड इसके लिए भी आपको जो है आफ्टर 10 ईयर के बाद जो है रिन्यूअल करते रहना पड़ेगा. This is the good relation, Coca-Cola. Everyone know about the Coca-Cola. Coca-Cola is a symbol where you can see lots of IP, that Coca-Cola, right? The brand is coming under, trademark. And the shape of the bottle, what kind of the shape it is coming under the industrial design. This kind of the bottle, maybe when they manufactured that, when they started to produce the product, that time that was completely novel. Patent may have been in and the composition, right? What the composition is available here, and the composition is also a novel point here. And the copyright in case of the text, how that they are advertising in their website, this is also coming under copyright. So here some examples where a combination of the IP you can see. The logo, right? The logo is coming under of the Apple or iPhone is coming under trademark. On the other side, what the technology, right? What kind of the chip, what kind of the other technology involved in the manufacturing of that iPhone, that is coming under the patent. So these are the some examples as you can see here. This is just for the general knowledge purpose, if you wanted to pursue, if you wanted to have or be in that career. So in that case, you must know about the organizational structure, the ministry, all the IP, right? All the IP, either it is a patent, trademark, geographical indication, patent information system. It all are all are controlled by a Controller General of Patent, and as of now, the Controller General of Patent is Shri Unnat. And this is the Controller General of Patent, Design and Trademark is coming under Ministry of Commerce and Industry, Department of Industry, Policy and Promotion, and who is the Minister of Commerce and Industry, Shri Piyush Goyal ji. Right?
एंड यू मस्ट नो अबाउट द पेटेंट ऑफिस। अगर आप पेटेंट एजेंट के लिए करते हैं या पेटेंट ऑफिस के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पेटेंट ऑफिस जो है कहाँ कहाँ है। एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए आपको जाना है तो आपको चेन्नई ही एक है। आजकल बहुत सारी चीजें मोस्ट ऑफ द चीजें ऑनलाइन हो रही है, but you must aware about the where you have to approach and which office you need to be approached. You cannot go to Delhi, right? You cannot go to Delhi for the geographical indication registry. You know? So patent information system, yeah, this is presented in or situated in Nagpur. This is a system where lots of the trainings and we are conducting lots of the workshop in that patent information system. Coming to the next part is about the patent. As I told that most of our things will be focusing on the patent, and the patent, what is, we already discussed that the patent is nothing. It is a right, it is an exclusive right what that inventor assignee will get from government authority, right? Especially and that नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट। इंटरनेशनल पेटेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेंशन इंडिया में प्रोटेक्ट है तो आपको इंडिया का ही राइट मिलेगा, आपको यूएस का राइट नहीं मिलेगा। अगर आपका इन्वेंशन जो है आप सिंगापुर में प्रोटेक्ट है तो आपको सिंगापुर का ही राइट मिलेगा। दिस इज अ नेशनल, दिस इज नॉट आपने एक बार पेटेंट कर दिया और आपको पूरी दुनिया में आपको राइट मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको जो है उसके लिए हर एक कंट्री में अपना अपना बार बार जाके आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इफ यू वांटेड टू कमर्शियलाइज योर प्रोडक्ट इन दैट कंट्री। गवर्निंग टाइमलाइन आपको पता है 20 ईयर है, मोनोपोली मिल जाती है। एंड रिड्यूस द कॉम्पिटिटिव, व्हाट इज द बेनिफिट दैट इन्वेंटर और दैट असाइनी विल गेट। दैट इन्वेंटर एंड असाइनी विल गेट द बेनिफिट विद रिस्पेक्ट टू द लाइसेंसिंग, assignment, technology transfer. They can do merger and acquisition, IP auctions. They can simply sell their IP. I have this IP. This IP is going to give you additional benefit if you can simply sell your IP to the big shots. You know. There's a history in that history, the oldest patent, just for the general knowledge, that oldest patent of intellectual property, and that oldest patent was granted to John of Othinen in England in 1449 for the glass manufacturing. As you are nowadays listening lots of about IPR, but this is not a new thing, you know. So right provided or this is the right, what kind of the right you will get. You can stop any person to making, using, selling, offering, importing anything. If they are doing with your invention, you have a complete right. You can go to further and say that this person is going use my invention, either I'll get the royalty or get the injunction on that, you know. So example, suppose one person, right? One person get a patent grant, right? Or a company A get a patent grant, got a patent grant for a device. That device is embedded in the computer system that reduce power consumption in the laptop. Now my question is that does the patent permit that device embedded in the computer system, does the patent permit the computer company A to manufacture and sell the laptop within the embedded device or not? So the clear cut answer is no. Why? Because the separate patent license may require, it may be in that laptop you have novelty, you have your invention to reduce the power consumption in the laptop, but you don't have the protection to manufacture, have the right on the whole laptop, right? Second point, what for your further understanding, does the patent permit the company to stop laptop manufacturing to use the same kind of the technology? Yes, because you have a right. You have a right to protect your invention, which is going to reduce the power consumption in the laptop. If any company wanted to use that particular system in their laptop to reduce power consumption in that way, they can simply say that if you wanted to use those system in your computer in that way, I will get a royalty or you get
you can take a license from us, right? So now it is important for us, who all can be sued under patent law. Any kind of the manufacturer, right? Any kind of the manufacturer can be sued. If any person is simply selling your invention, any person is purchasing this is a patented product, and they are importing that, and the other thing is that they are using your patented product. So कौन सा जो है, if any person is using your patented product, you cannot sue. If any person is just we will go through in very detail about that. If any person is selling your invention, you can sue. If any person is manufacturing your invention, you can sue. If any person using your product, no, because if they will not use your product, then how you can get money, right? If any person is importing, importing, or any person is exporting, we will go through each and every detail, what kind of the situation you can simply uh, uh, sue to other one or not. These are the something that you must know about that. These are the things cannot be patented. Newly discovered minerals, right? Discovery, invention you can protect. इन्वेंशन आप प्रोटेक्ट कर लोगे, बट आप जो है डिस्कवरी इन ये नहीं आप बोलो कि मुझे जो है मैं जा रहा था, उसके बाद मुझे जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले एंड उसको मुझे जो है वो करना है, आप वो नहीं कर सकते. लॉ ऑफ द नेचर ऑफ द फिजिकल फिनोमेना, यू कैन नॉट गो फॉर दिस. आइडिया यू कैन नॉट गो फॉर द आइडिया, यू कैन गो फॉर द either you have to convert that idea into the invention. पेटेंट्स के यूजली बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट क्या क्या है. सपोज ये फोन आप देख सकते हैं, राइट? द फोन यू कैन सी हियर, द प्रोटेक्ट द यूजफुल फंक्शन, राइट? In this way, you can get a protection for the useful function and a method to reducing noise in telephone calls when that ringing and that noise, and then this product is about a method to reducing noise in the telephone calls. Then you can get a protection and 20 years from the date of filing, right? Not the date of publication. You will learn about that. Plant patent होते हैं. प्लांट पेटेंट में अगर आपकी कोई न्यू वेराइटी, राइट, आपने इनोवेट करी है, इन दैट वे यू कैन गेट अ पेटेंट प्रोटेक्शन ऑन दिस. इसके लिए भी सेम ही टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, 20 ईयर का टाइम पीरियड रहता है. डिजाइन पेटेंट में क्या है? डिजाइन पेटेंट में अगर आपका कोई ऑर्नामेंटल डिजाइन है, कोई कॉन्फ़िगरेशंस है, आपने कोई कप ऐसा डिजाइन कर दिया जिससे ये जो है कुछ नॉवेल्टी आ रही है, राइट, ऑब्वियसनेस, नॉन ऑब्वियसनेस लग रहा है, तब ऐसी सिचुएशन पे यू कैन गेट अ प्रोटेक्शन. बट द टर्म ऑफ द डिजाइन पेटेंट, द टर्म ऑफ द डिजाइन 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट इज इश्यूड. क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्राइटेरिया, पेटेंट के क्राइटेरियाज होते हैं. आपको नॉवेल्टी फिट होनी चाहिए आपकी. अगर आप पेटेंट इन्वेंशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी नॉवेल्टी फिट होनी चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप फिट होना चाहिए, ये नॉन ऑब्वियसनेस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी आपकी होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एस्प्रिन के बारे में बात करा जाए, जब से एस्प्रिन सबसे पहले जो है जब इन्वेंटेड हुई थी, तब एस्प्रिन जो को प्रोटेक्ट करा गया थ्रू द नॉवेल्टी, कि ये नॉवेल है एंड ऐसी कभी देखी नहीं गई एंड इट हैज सम फीवर जो है आपकी कम करने में काम होती है. इन्वेंटिव स्टेप कुछ टाइम के बाद ये करा गया कि जो है आप इन्वेंटिव स्टेप क्या है? इन्वेंटिव उस टाइम जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इंडिया में अलाउ नहीं है, बट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज अलाउड इन यूएस. अगर आपकी एस्प्रिन है, एस्प्रिन का एक और काम बाद में निकला कि वो एंटीकोगुलेंट भी होती है. जब आपको हार्ट अटैक आता है, तब हार्ट अटैक आता है, आपका एंटीकोगुलेंट होती है. ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में ओके, दिस इज अ नॉन ऑब्वियस. जो पहले ये पता था फीवर में काम होती है, बट ये नहीं पता था कि ये जो है हमारी जो ब्लड थिनिंग में भी काम होती है. तो ये क्या हो गया? आपको नॉन ऑब्वियस फीचर हो गया. इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, आप जो भी कुछ बना रहे हो उसकी एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बोला मेरा नॉवल है, मेरा नॉन ऑब्वियसनेस है, बट उसका यूज ही नहीं हो पा रहा. Because it is all about to get a benefit, right? It is not about कि मेरे पास 500 पेटेंट है जबकि उस 500 पेटेंट का बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा. ऐसा नहीं हो सकता.
एक्सेप्शंस क्या है, ये सेक्शन 3 के अंदर आता है। हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो है हमारे क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं जो पेटेंट नहीं कर सकते। आपका लॉ ऑफ नेचर है, abstract आइडियाज है, मेंटल प्रोसेसेस है, प्रिंटेड मटेरियल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है एंड कोई बिजनेस मैथड। इसके अलावा और भी है, पूरे सेक्शंस है, तो सेक्शन 3 के अंदर आते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द लेटर ऑन। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन शुड फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी क्लास। अब आपका इन्वेंशन प्रोसेसेस हो सकता है, आपने कोई मेथड बताया कि एक मेथड है, एक मेथड ऑफ डीप ड्रिलिंग, दिस कैन बी पेटेंटेड। अगर आपने कोई मशीन या सिस्टम बनाया, दैट मशीन इज गोइंग टू हेल्प टू यू टू ड्रिल, देन यू कैन गेट अ पेटेंट। इफ द आर्टिकल ऑफ द मैन्युफैक्चर, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, जो आपने जैसे कि सोप जो है डिश बनाई, तो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो आप जो कर सकते हो, कंपोजिशन आप कर सकते हो। आप बोलो कि मैं कुछ भी उठा के पेटेंट करूंगा, आप कुछ भी उठा के पेटेंट नहीं कर सकते। ऐसे कि हर एक कंट्री का एक अपना एक रूल है। इंडिया में मैथड ट्रीटमेंट अलाउ नहीं है, जैसे कि आई टोल्ड अबाउट यू, बट यूएस में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। हर एक कंट्री की में जो है मोस्ट ऑफ द चीजें काफी सिमिलैरिटी भी है, बट काफी चीजें डिफरेंस भी है। इंडिया में आप मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि आप बोलो कि मैंने एक ऑलरेडी अवेलेबल मेडिसिन है, उसका जो है मैंने किसी और यूज में मैंने कर लिया, रिपर्पसिंग कर ली, तो यू कैन नॉट गो फॉर दिस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जब आप पेटेंट डॉक्यूमेंट को देखोगे, वी विल गो थ्रू all the patent document, how that patent document look like when you will work on this. So patent document जब आप देखते हो, तब ऐसी सिचुएशन में कुछ डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो डेट्स क्या होती हैं? वो एप्लीकेशन डेट होती है, फाइलिंग डेट होती है, आपकी पब्लिकेशन डेट होती है, आपकी ग्रांट डेट होती है, आपकी जो है आपकी एक्सपायरी डेट होती है। ये जो डेट्स होती हैं, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू डिटरमाइन दैट कि जो पेटेंट है उसका प्रोटेक्शन कितने दिन तक रहेगा। अगर आप सपोज करो कि अगर आप, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट और एप्लीकेशन डेट, इन तीन चीजों में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि अब हम पेटेंट का कैलकुलेशन करके कैसे बताएं कि पेटेंट कितने साल तक प्रोटेक्टेड रहेगा, या पेटेंट का जो प्रोटेक्शन है वो जो या पब्लिकेशन डेट से हम कंसीडर करें, या फाइलिंग डेट से कंसीडर करें, या एप्लीकेशन डेट से कंसीडर करें, या प्रायोरिटी डेट से कंसीडर करें। दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सपोज यू नो फाइलिंग डेट क्या होती है? फाइलिंग डेट ये होती है कि आपके पास इन्वेंशन है, राइट? आपके पास इन्वेंशन है, आपने उस इन्वेंशन को वर्कआउट करा लैब में, एंड देन आप गए पेटेंट ऑफिस में, आपने पेटेंट को उठा के फाइल कर दिया, दैट टाइम यू विल गेट द फाइलिंग डेट। अब फाइलिंग डेट, राइट, फाइलिंग डेट क्या, आपने एप्लीकेशन फाइल करा तो आप उसे एप्लीकेशन डेट भी कह सकते हो। प्रायोरिटी डेट क्या है? प्रायोरिटी डेट इज द फर्स्ट डेट, राइट? आप सपोज करो कि आपने इंडिया में अकेले फाइलिंग करा, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आपकी फाइलिंग डेट एंड प्रायोरिटी डेट एंड एप्लीकेशन डेट सब कुछ सेम होगी। अब सपोज करो कि आपने एक पेटेंट जो है फाइल करा था उसी टेक्नोलॉजी का यूएस में, और आपने सोचा कि यार कुछ टाइम के बाद आप सोचा मैं इंडिया में भी अपनी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करूंगा, एंड मैं इंडिया में भी जो है अपना जो है पेटेंट फाइल करना चाहता हूं। तब ऐसी सिचुएशन पे जो प्रायोरिटी डेट होगी वो डेट होगी जब आपने यूएस में फाइल करा। प्रायोरिटी डेट आपने इंडिया में फाइल करा, वो आपकी प्रायोरिटी, वो आपकी फाइलिंग डेट और एप्लीकेशन डेट हो सकती है, बट वो आपकी प्रायोरिटी डेट नहीं होगी। पब्लिकेशन डेट क्या होती है? पब्लिकेशन डेट के बारे में बात करा जाए तो पब्लिकेशन डेट इज नथिंग, पब्लिकेशन डेट इज अबाउट यू नो पब्लिकेशन डेट इज नथिंग। पब्लिकेशन जब आपका पेटेंट डॉक्यूमेंट जो है 18 मंथ के बाद, और आजकल एक्सपीडाइट जो है पब्लिकेशन भी होते हैं, अगर आपका जब पब्लिश होता है, जब आपके ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, जो आपके ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश होता है। एंड लास्ट इज अबाउट द इशू डेट। इशू डेट क्या होती है? जब आपका पेटेंट ग्रांट हो गया, यू नो, आफ्टर जब आपका पेटेंट पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद जो है एग्जामिनेशन प्रोसेस में किया, सब कुछ हुआ, एंड देन पेटेंट ग्रांट हो गया, उस डेट को हम इशू डेट कहते हैं। एंड व्हाट इज द एक्सपायरी डेट? जब आपका पेटेंट जो है अपने टर्म को खत्म कर देता है, तब उसको एक्सपायरी डेट कहते हैं, राइट? तो 4 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, बहुत ओवरलैप करते हैं। जस्ट टेक वेरी केयरफुली अबाउट दैट कि आपकी फाइलिंग डेट, राइट, फाइलिंग डेट, प्रायोरिटी डेट एंड एप्लीकेशन डेट, राइट? एज आई टोल्ड यू दैट फाइलिंग डेट और एप्लीकेशन डेट सेम हो सकती है, प्रायोरिटी डेट भी सेम हो सकती है, बट पब्लिकेशन डेट, इश्यू डेट सेम नहीं होगी, राइट? पब्लिकेशन डेट क्या है? पब्लिकेशन डेट ये है कि जब पेटेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ,
ग्रांट से पहले के पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपका पेटेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश हो उसके बाद वो एग्जामिनेशन में जाता है एंड देन पेटेंट डॉक्यूमेंट विल गेट ए ग्रांट। फाइलिंग डेट एंड प्रायोरिटी डेट के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने इंडिया में ही करा तो वहां पे ऐसी सिचुएशन कोई और कंट्री में हमें फाइल ही नहीं करा, ऐसी सिचुएशन में फाइलिंग डेट, प्रायोरिटी डेट और एप्लीकेशन डेट सब कुछ सेम होगी। बट अगर कोई कंट्री जो है जैसे कि हमारी यूएस कंट्री में पहले फाइल करा तब ऐसी सिचुएशन प्रायोरिटी डेट वो कंसीडर होगी जो हमारी यूएस कंट्री की है। राइट, आई होप ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस। एक केस लॉ देखते हैं। केस लॉ क्या है, जैसे कि ए है, ए को एक ड्रीम आया 12 जुलाई 2016 में एक ड्रीम आया अबाउट द टाइम मशीन के बारे में। ए ने क्या था, ए ने बी को उठा के ए ने क्या करा, ए ने बी को उठा के जो है वो ड्रीम को बताया कि मुझे जो है एक ऐसा ऐसा आइडिया आया। उसने बताया कि वो आपको 20 अगस्त में आपको उसको बताया। ए ने जो है क्या करा, वर्क ऑन आइडिया एंड मेक अ प्रोटोटाइप। ए ने जो प्रोटोटाइप बनाया वो आपका जो है 2 अक्टूबर 2016 में अपना बना डाला। देन ऑन एडवाइस ऑन हिज फ्रेंड बी, ई ने जो है फिर उसको फाइल कर दिया, पेटेंट को फाइल कर दिया 2 अक्टूबर जो है 2016 में जाके यूएस इंडिया में फाइल कर दिया, बिकॉज उस टाइम जो है यूएस पेटेंट ऑफिस क्लोज था। तब जो है उसके बाद यूएस में उन्होंने फाइल करा 8 अक्टूबर जो है दिस। अब यहाँ पे डेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेट को आप लिख के रख लो। डेट को लिख के रखने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका फाइलिंग डेट क्या होगी, फाइलिंग डेट आपकी 4 अक्टूबर होगी या आपकी ये होगी, राइट। फाइलिंग डेट यूएस के लिए फाइलिंग डेट 8 अक्टूबर होगी, बट यहाँ के लिए आपकी फाइलिंग डेट, इंडिया के लिए आपकी फाइलिंग डेट आपकी 4 अक्टूबर होगी। अब यहाँ पे प्रायोरिटी डेट क्या है, प्रायोरिटी डेट में आप ये देखते हो कि प्रायोरिटी डेट क्या होगी, प्रायोरिटी डेट आपकी 4 अक्टूबर ही रहेगी, क्योंकि आपकी ओरिजिन वहां फर्स्ट फाइलिंग जो जब भी फर्स्ट फाइलिंग हो, फर्स्ट फाइलिंग इज इक्वल टू प्रायोरिटी डेट, सिंपल सी बात, राइट। एंड द पब्लिकेशन डेट वो उसके बाद क्या होगा, ऑल द प्रोसीडिंग्स, और ये उसके बाद वो डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गया 4 मार्च 2018 में। एंड उसके बाद वो ग्रांट की उसको प्रोसेस चली, जो भी प्रोसेस चलने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है ग्रांट कब हुआ, 10 जुलाई। तब ऐसी सिचुएशन में एक क्लैरिटी, एक आइडिया आया। आइडिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता, एक आइडिया दूसरे आइडिया को बंदे ने को बताया, उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। व्हेन and very important, when you are going to file in the patent office, that is very important. This person A filed a patent in on 4th October 2016, so that is a priority date. And after that he took the same kind of the priority and going to file in the US, and then this this 8th of October can be considered, will be considered as filing date, for filing date, application date, but this cannot, 8th of October cannot consider, this cannot consider as a priority date. And then उसके बाद ये पब्लिश हुआ, पब्लिश होने के बाद जो है उसके बाद ये ग्रांट हुआ, दैट इज कॉल्ड इशू डेट। Next slide is about type of patent application. There are lots of the patent kind of the patent application: provisional application, ordinary application, conventional application, PCT international application, PCT national phase application. Continuation patent application can be divided into 3 parts: continuation, continuation in part and division, and reissue patent. We will discuss each and everything in our next lecture. So so far we have what we learned, right? Can we go back? Well, we learned about the basics of IPR, and what is the significance of IPR, what is the importance of IPR, different types of the IPR, what is the timeline of the IPR, and what kind of the different kinds of the dates we learned that, right? Dates we learned that at so many, because those kind of the dates usually create confusion. The relationship क्या है, कहाँ पे पेटेंट ऑफिस कौन सा सिचुएटेड है, पेटेंट के लिए जो है हिस्ट्री थोड़ी हमने पढ़ी कि ये है हिस्ट्री क्या है, कौन पर्सन किसको सू कर सकता है, एंड जो है कौन से पेटेंट को हम किस टाइप की पेटेंट क्राइटेरिया क्या होते हैं हमारे पेटेंट फाइलिंग के लिए, और किस चीजों को हम जो है पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। इफ यू विल हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट प्लीज फील फ्री टू just write your comment, and so I'll address each and everything on time. Thank you so much.